Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, formulae and functions in Excel. Let's know about using formulae, using functions. Excel is an electronic spreadsheet program that helps you to enter numerical values or data into rows and columns. You can use these numerical entries for such things as calculations, graphs, and statistical analysis. You have already learned a lot about the different features of Excel in the previous classes. Now in this chapter, you will move further and learn to use formulae and functions in Excel and learn how to perform calculations automatically by using these formulae and functions. देखिए आपकी एक्सेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और डेटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में इसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत एक्सेल के बारे में. अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेल में आपके फॉर्मूलेज हैं और उनके फंक्शंस हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट इज यूजिंग फॉर्मूले. One of the most powerful features in Excel is the ability to calculate numerical information using formulae. Just like a calculator, Excel can add, subtract, multiply, and divide. Let's learn how to use cell references to create simple formulae. जैसे आपका calculator करता है addition, division, multiplication, same हम Excel पे कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले mathematical operators. Excel uses standard operators for formulae such as plus sign for addition, a minus sign for subtraction, an asterisk for multiplication, a forward slash for division, and a caret for exponents. आपको देखिए एडिशन के लिए आपको पता है क्या साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट के आपको साइंस दिए गए हैं. All formulae in Excel must begin with an equal sign. This is because the cell contains or is equals to the formula and the value it calculates. देखिए जितने भी फॉर्मूले आपके एक्सेल में होंगे वो हमेशा शुरू करेंगे इक्वल साइन से, राइट. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सेल रेफरेंसेस. While you can create simple formulae in Excel using numbers, for example 2 plus 2 or 5 into 5, most of the time you will use cell addresses to create a formula. This is known as making a cell reference. Using cell references will ensure that your formula are always accurate because you can change the value of reference cells without having to rewrite the formula. ओके जब कभी भी आप एक सिंपल फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल में नंबर्स के साथ, जैसे कि अगर आपको कुछ प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेल एड्रेसेस को यूज़ करते हैं एक फार्मूला क्रिएट करने के लिए. ऐसा और इसे बोला जाता है सेल रेफरेंस. In the formula below, cell A3 adds the values of cell A1 and A2 by making cell reference. When you press enter, the formula calculates and displays the answer in cell A3. देखिए फॉर्मूला आपको दिया गया है, सेल A3 में क्या ऐड हो रहा है, आपकी वैल्यूज हो रही हैं A1 एंड A2 की, जिससे कि वो बन रहा है आपका सेल रेफरेंस. तो जब आप प्रेस करेंगे एंटर तो फॉर्मूला कैलकुलेट होगा और जो आंसर है वो आपका सेल A3 में डिस्प्ले होगा. If the values in the referenced cells change, the formula automatically recalculates the value. ओके अगर आपकी जो वैल्यूज है रेफरेंस सेल्स में चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली जो है रिकैलकुलेशन हो जाएगी एंड देन वैल्यू चेंज हो जाएगी. By combining a mathematical operator with cell references, you can create a variety of simple formulae in Excel. Formula can also include a combination of cell references and numbers as in the examples below. अगर हम mathematical operators को combine करें सेल रेफरेंसेस के साथ तो वैरायटी ऑफ सिंपल फॉर्मूले हम एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है नीचे जैसे कि equals to A1 plus A2 adds cell A1 and A2 equals to C4 minus 3. That means subtract 3 from cell C4 is equals to E7 slash J4 divide cell E7 by J4. और इसी तरह से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर इसमें यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ फॉर्मूला. इन द एग्जांपल बिलो यूज अ सिंपल फॉर्मूला एंड सेल रेफरेंस टू कैलकुलेट बजट. आपको एक एग्जांपल दिया गया है उसके थ्रू आप समझेंगे किस तरह से सिंपल फॉर्मूला यूज किया गया. सबसे पहले सिलेक्ट द सेल दैट विल कंटेन द फॉर्मूला. इन द एग्जांपल सिलेक्ट सेल D12. नेक्स्ट टाइप द इक्वल साइन. नोटिस हाउ इट अपीयर्स इन बोथ द सेल एंड द फॉर्मूला बार. सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे सेल को जिसमें आपका फॉर्मूला हो गया. तो एग्जाम्पल में आपको D12 सेलेक्ट किया हुआ है. देन आप टाइप करेंगे इक्वल साइन एंड उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से सेल और फॉर्मूला बार चेंज हो जाएगा. टाइप द सेल एड्रेस ऑफ द सेल यू वांट टू रेफरेंस फर्स्ट इन द फॉर्मूला. सेल D10. इन द एग्जाम्पल अ ब्लू बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द रेफरेंस्ड सेल. इसके बाद आप क्या करेंगे, सेल एड्रेस को टाइप करेंगे. सेल जिसको आप रेफरेंस देना चाहते हैं फर्स्ट फॉर्मूला पे, जैसे कि आपका सेल D10 है एग्जाम्पल में, एक ब्लू बॉर्डर जो है वो अपीयर हो जाएगी रेफरेंस्ड सेल पे.
Next, type the mathematical operator you want to use. In the example, type the addition sign plus. आप कोई भी mathematical operator use कर सकते हैं, but example में plus किया गया है तो plus का sign. Type the cell address of the cell you want to reference. Second in the formula, cell D11 in the example, a red border will appear around the reference cell. इसके बाद आप फिर से सेल एड्रेस को टाइप करेंगे जिसको भी आप रेफरेंस देना चाहते हैं सेकेंड फॉर्मूला में, जैसे कि आपको दिया गया है सेल D11 एंड रेड बॉर्डर अपीयर हो जाएगा रेफरेंस्ड सेल में. Press enter on keyboard, the formula will be calculated and the value will be displayed in the cell. If you select the cell again, notice that the cell displays the result while the formula bar displays the formula. इसके बाद आप कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, देन आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपका कैलकुलेट हो जाएगा एंड जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी आपकी सेल में. अगर आप सेल को फिर से सिलेक्ट करते हैं तो जो सेल है वो डिस्प्ले करेगा आपका रिजल्ट, जबकि जो फॉर्मूला बार है वो डिस्प्ले करेगा आपका फॉर्मूला. चलिए इस एग्जाम्पल को अब हम एक्सेल शीट पे करके देखते हैं. सबसे पहले आप आएंगे D12 में, इक्वल्स टू का साइन, देन आपका आएगा D10 एंड देन एडिशन, यानी कि आपको प्लस करना है, आपका D11 एंड देन एंटर, और देखिए ऑटोमेटिकली आपका टोटल हो गया है. No more. If the result of a formula is too large to be displayed in a cell, it may appear as pound signs instead of a value. This means the column is not wide enough to display the cell content. You simply need to increase the column width to show the cell content. देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे अगर फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपके सेल में वो डिस्प्ले नहीं होगा, उसमें एक्चुअली आपके पाउंड साइंस आ जाएंगे वैल्यू के बजाय. इसका मतलब क्या है, जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाए. तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे. वैल्यूज विद सेल रेफरेंसेस. The true advantage of cell reference is that they allow you to update data in your worksheet without having to rewrite formula. In the example, the value of cell D10 is modified from 1200 to 1800. The formula in D12 will automatically recalculate and display the new value in cell D12. देखिए सेल रेफरेंस का एडवांटेज ये क्या है कि अगर आप कभी भी वैल्यूज चेंज करते हैं तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएगा और आपकी न्यू वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी. तो चलिए जो आपका एग्जाम्पल था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं D10 में. अब देखिए D10 में आपका पहले 1200 था, अब हमें इसे करना है 1800 एंड देन एंटर. देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो है रिकैलकुलेट हो गया, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है. To create a formula using the point and click method, instead of typing cell addresses manually, you can point and click the cells you want to include in your formula. This method can save a lot of time and effort when creating formula. Step 1. Select the cell that will contain the formula. In the example, select cell D4. Type the equal sign. Select the cell you want to reference first in the formula. Cell B4 in the example. The cell address will appear in the formula. Type the mathematical operator you want to use. In the example, type the multiplication sign. Select the cell you want to reference second in the formula. Cell C4 in the example. The cell address will appear in the formula. Next is press enter on your keyboard. The formula will be calculated and the value will be displayed in the cell. चलिए इस example को हम करते हैं Excel sheet पे. सबसे पहले हम आएंगे D4 में, then equals to, and आप टाइप करेंगे B4, then multiplication and C4 and enter. देखिए ये आपका कैलकुलेट हो गया है ऑटोमेटिकली. Next is copying formula with the fill handle. Formula can also be copied to adjacent cells with the fill handle, which can save a lot of time and effort if you need to perform the same calculation multiple times in a worksheet. The fill handle is a small square at the bottom right corner of the selected cells. Step 1. Select the cell containing the formula you want to copy. Click and drag the fill handle over the cells you want to fill. Next is, after you release the mouse, the formula will be copied to the selected cells. चलिए देखते हैं इसे. अब आपने फर्स्ट रो में आपने कैलकुलेट किया था, अब आपको बाकी भी करने, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे ड्रैग करेंगे. आपका छोटा सा जो स्क्वायर नजर आ रहा है इसे ड्रैग करेंगे एंड देन माउस को हम छोड़ देंगे एंड देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट इज यूजिंग फंक्शंस. A function is a predefined formula that performs calculation using specific values in a particular order.
Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cells. देखिए फंक्शन आपका एक्चुअली प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो कि बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. चलिए देखते हैं सबसे पहले द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन. In order to work correctly, a function must be written in a specific way, which is called the syntax. The basic syntax for a function is the equals sign, the function name sum, for example, and one or more arguments. Argument contains the information you want to calculate. The function in the example below would add the values of the cell range A1 is to A20. देखिए अगर आप करेक्टली वर्क करना चाहते हैं तो फंक्शन को एक स्पेसिफिक वे में लिखना होता है, जैसे कि कहते हैं कि सिंटेक्स. जैसे बेसिक सिंटेक्स आपका होता है इक्वल्स टू का साइन, राइट, देन फंक्शन नेम फॉर एग्जांपल सम, एंड देन उसके बाद एक या ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में शो किया गया है. आपके पास इक्वल्स टू का साइन है, देन फंक्शन नेम है आपके पास सम, एंड आर्ग्यूमेंट इज A1 is to A20. Working with arguments. Arguments can refer to both individual cells and cell ranges and must be enclosed with parentheses. You can include one argument or multiple arguments depending on the syntax required for the function. For example, the function is equals to average B1 is to B9 would calculate the average of the values in the cell range B1 is to B9. This function contains only one argument. Multiple arguments must be separated by a comma. For example, the function is equals to sum A1 is to A3, comma C1 is to C2, comma even will add the values of all of the cells in the three arguments. देखिए आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बोथ आपके इंडिविजुअल सेल्स भी एंड सेल रेंजेस भी एनक्लोज होने चाहिए पैरेंथेसिस, यानी आपके जो ब्रैकेट्स होते हैं, राइट. इसमें आप एक आर्ग्यूमेंट इंक्लूड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, आपकी स्क्रीन पे राइट साइड दिया गया है. देखिए सबसे पहले एवरेज निकालना है B1 is to B9 का, एंड देन आपके पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट जो है वो सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है आपको, और इस तरह से सेल्स की जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाएंगी इन थ्री आर्ग्यूमेंट्स में. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ फंक्शन. There are variety of functions available in Excel. Here are some of the most common functions you will use. Excel में बहुत सारे आपके functions हैं, तो देखिए कौन कौन से functions हैं. सबसे पहले है sum. This function adds all of the values of the cells in the argument. इस function sum का function है सारी values को add करना. Average. This function determines the average of the values included in the argument. It calculates the sum of the cells and then divides the value by the number of cells in the argument. देखिए ये फंक्शन आपका एवरेज निकालता है, जो भी आपकी वैल्यूज ऐड होती हैं इंक्लूडेड होती हैं आर्ग्यूमेंट में. ये सबसे पहले आपका क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा सेल्स का, एंड देन डिवाइड करेगा उस वैल्यू को नंबर ऑफ सेल्स जो कि आर्ग्यूमेंट में है. Count. This function counts the number of cells with numerical data in the argument. It is useful for quickly counting items in a cell range. ये फंक्शन आपका क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को न्यूमेरिकल डेटा के साथ आर्ग्यूमेंट में जो आपके रहते हैं. नेक्स्ट है मैक्स. दिस फंक्शन डिटरमिन्स द हाईएस्ट सेल वैल्यू इंक्लूडेड इन द आर्ग्यूमेंट. min, this function determines the lowest cell value included in the argument. maximum function का काम है कि highest cell value को include करना, and minimum का काम है कि जो lowest cell value है उसे argument में include करना. Next is to create a function using the AutoSum command. The AutoSum command allows you to automatically insert the most common functions into your formula, including sum, average, count, min, and maximum. In the example below, use the sum function to calculate the total cost for a list of recently ordered items. Select the cell that will contain the function. In the example, select cell D7. In the editing group, on the home tab, click the arrow next to the AutoSum command. Next, choose the desired function from the drop-down menu. In the example, select sum. Excel will place the function in the cell and automatically select a cell range for the argument. In the example cells, D2 is to D6 was selected automatically. Their values will be added to calculate the total cost. If Excel selects the wrong cell range, you can manually enter the desired cells into the argument. Press enter on your keyboard. The function will be calculated and the result will appear in the cell. In the example, the sum of D2 is to D6 is 1380. चलिए इस एग्जाम्पल को अब हम एक्सेल शीट पे करके देखते हैं. सबसे पहले हम आएंगे D7 पे, देन आपका ऑटो सम, एंड देन आप देखिए आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया आपका सम D2 is to D6, एंड देन आप करेंगे एंटर प्रेस, एंड देखिए ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो गया है. No more. The AutoSum command can also be accessed from the Formulas tab. जो आपका AutoSum command है, आप उसे Formula
टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं. No more, you can also use the Alt plus equal to keyboard shortcut instead of the AutoSum command. To use this shortcut, hold down the Alt key and then press equal sign. आप AutoSum command को shortcut भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं. कैसे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? Hold down करेंगे Alt key को and then press करेंगे equal sign. To enter a function manually, if you already know the function name, you can easily type it yourself. In the example, select the cell that will contain the function. In the example, select cell D7. Type the equal sign and enter the desired function name. You can also select the desired function from the list of suggested functions that appears below the cell as you type. In the example, type equals to sum. Enter the cell range for the argument inside parentheses. In the example, type D2 is to D6. This formula will add the values of cells D2 is to D6. Press enter on your keyboard. The function will be calculated and the result will appear in the cell. चलिए इस एग्जाम्पल को अब हम एक्सेल शीट पे करके देखते हैं. सबसे पहले आप आएंगे D7 में, देन आपका इक्वल्स टू का साइन, देन यू विल राइट सम SUM, देन आपका पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, देन आप D2 is to D6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन आप एंटर करेंगे और देखिए आपकी ये कैलकुलेशन हो गई है. No more. Excel will not always tell you if your formula contains an error, so it is up to you to check all of your formula. देखिए एक्सेल आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आपका जो फार्मूला है उसमें एरर है, इसलिए आपको अपने फार्मूलाज खुद ही चेक करने पड़ेंगे. The function library. While there are hundreds of functions in Excel, the ones you will use the most will depend on the type of data your workbooks contain. You can even use the function library on the Formulas tab to browse functions by category, such as financial, logical, text, and date and time. To access the function library, select the Formulas tab on the ribbon, look for the function library group, click the buttons in the interactive below to learn more about the different types of functions in Excel. देखिए एक्सेल में आपके होते तो बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस हैं, बट जो आप यूज़ करेंगे मोस्ट वो डिपेंड करेगा कि आपकी वर्कबुक्स में क्या है. आप इसके अलावा जो फंक्शन लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं कुछ ब्राउज करने के लिए, जैसे फंक्शंस कैटेगरी की वाइज, जैसे कि फाइनेंशियल है या लॉजिकल है, टेक्स्ट है या फिर डेट एंड टाइम के लिए. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको क्लिक करना पड़ेगा बटन्स में इंटरैक्टिव जो आपको नीचे दिया गया है, एंड देन आपको डिफरेंट फंक्शंस एक्सेल के इसमें पता चल जाएंगे. Quick review. One of the most powerful features in Excel is the ability to calculate numerical information using formula. Excel uses standard operators for formulas such as plus, minus, multiplication, division, for addition, subtraction, multiplication, and division respectively. While you can create simple formula in Excel using numbers, most of the time you will use cell addresses to create a formula. देखिए एक बहुत powerful feature है आपके पास Excel का. Actually इस की वजह से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हुए, राइट. और इसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सभी कर सकते हैं. एंड जब कभी भी आप सिंपल फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल में नंबर्स के थ्रू, नंबर्स को यूज़ करके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सेल एड्रेस का यूज़ करते हैं फार्मूला क्रिएट करने के लिए. Excel will not always tell you if your formula contains an error, so it is up to you to check all of your formula. The fill handles is a small square at the bottom right corner of the selected cells. A function is a predefined formula that performs calculations using specific values in a particular order. Fill handle आपका एक छोटा सा स्क्वायर होता है जो आपके राइट कॉर्नर में होता है सिलेक्टेड सेल्स के. इसी तरह से फंक्शन आपका एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.